हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे एंड अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B से पहले जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए थे उस सब को सॉल्व कर चुके हैं। सो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1B का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। सो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है। सो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। सो दिस इज माय क्वेश्चन। सो लेट मी मार्क इट हियर। सो दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू। वैल्यू एडिशन किसको रेफर कर रहा है? ठीक है, वैल्यू एडिशन उसको रेफर कर रहा है कि आप जो प्रॉफिट ऐड कर रहे हो। मैंने बोला था अगर कोई एक चीज़ में 20 रुपया में खरीदता हूँ और उस पर कुछ चीज़ें बना के, जैसे कि नोटबुक का एग्जांपल लिया था, मैंने 20 रुपया का नोटबुक खरीदा हूँ, उस पर ड्रॉ किया हूँ और डेकोरेशन किया हूँ, ऐसा कुछ करके मैं कोई एग्जीबिशन में जाके बेचना चाहता हूँ, राइट। तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दिया और मैं कितना में बेचूंगा, उसको 50 रुपीज़ में बेचूंगा। जब 50 रुपीज़ में बेचूंगा वो 30 रुपीज़ क्या बोलूँगा मैं, दैट इज़ द वैल्यू एडिशन और आई कैन से ऑल्सो प्रॉफिट। सो बेसिकली एक्सपेंसेस के ऊपर जो प्रॉफिट लगाया जाता है उसको वैल्यू एडिशन बोला जाता है। ठीक है, सो आई कैन मार्क दिस वन। चलिए सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिटेड शैल ओनली बी अलाउड अगेंस्ट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? इनपुट टैक्स का क्रेडिट उस टाइम पे अप्लाई होता है जब कोई ट्रेडर कुछ सामान खरीदा है और उसको दूसरे कोई कंज्यूमर या और कोई ट्रेडर को बेच रहा है, राइट। सामान खरीदने के टाइम वो एक टैक्स दिया है और बेचने के टाइम वो टैक्स कलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसी टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आती है। क्या है वो टैक्स? आउटपुट टैक्स से हम लोग जो भी मिला है, आउटपुट टैक्स पूरे के पूरे गवर्नमेंट को ना दे के हम लोग कुछ डिडक्ट करते हैं। क्या डिडक्ट करते हैं? जो टैक्स हम लोग इनपुट टैक्स के रूप में दिए थे, मतलब ड्यूरिंग रॉ मटेरियल बाय, वो भी जो भी प्रोडक्ट या आर्टिकल खरीदने के टाइम जो टैक्स दिए थे वही टैक्स को हम लोग डिडक्ट करते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब यूज होता है? इसका मतलब जब हम लोग वही प्रोडक्ट या आर्टिकल को कोई दूसरा ट्रेडर या कंज्यूमर को बेचते हैं। दूसरा ट्रेडर या कंज्यूमर को बेचने के टाइम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आउटपुट टैक्स। तो दिस विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पर अगर देखोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट एप्लीकेबल, ओके, और नॉट अलाउड अगेंस्ट एनी टैक्स पेबल। मैं अगर इनकम टैक्स दे रहा हूँ उस टाइम पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा नहीं रहता है। सिमिलरली कोई रिफंड में तो डेफिनेटली नहीं, ये तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, रिफंड कहाँ से आएगा? नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आंसर होगा आउटपुट टैक्स। सो दिस वुड बी माई आंसर। ओके, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स, जैसे कि अभी मैंने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्या होता है? जब हम लोग वैल्यू ऐड करके बेच रहे हैं और जब बेचने के टाइम जो टैक्स कलेक्ट करके लाते हैं कंज्यूमर से, उसको जब गवर्नमेंट को देने की बारी आती है तो मेरा टैक्स मैं रख लेता हूँ, उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट ये किस केस में होता है? ठीक है, ये किस केस में होता है? जब मैं कुछ वैल्यू ऐड करके बेच रहा हूँ, राइट। सो दिस वुड बी माई राइट आंसर, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। टैक्स ऑन सेल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं वैल्यू नहीं ऐड किया हूँ और लेट से मैं सिर्फ सेल कर दिया हूँ, ठीक है, उस टाइम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो? अगर मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल था और उस रॉ मटेरियल को खरीदने में मैं कोई टैक्स नहीं दिया हूँ, ठीक है, एंड उस रॉ मटेरियल से, ठीक है, मैं कुछ लेट से प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ टू ए एंड कंज्यूमर, ओके, एंड यूजर। सो इसमें क्या हुआ? ठीक है, इसमें जो कलेक्ट करूँगा इससे मैं कुछ डिडक्ट नहीं कर पाऊँगा। वट एवर टैक्स आई कलेक्टेड, ठीक है, टैक्स जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इससे मैं कुछ डिडक्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इनपुट टैक्स कुछ नहीं दिया हूँ। सो सेल के टाइम पे भी नहीं होगा, परचेज के टाइम पे भी नहीं होगा। परचेज वही बोला है कि अगर आप परचेज सिर्फ किए, उसको वैल्यू ऐड करके किसी को नहीं दे रहे हो, राइट, तो आप इनपुट टैक्स
क्रेडिट नहीं कर सकते हो। तो किस केस में कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट? उसी केस में जब आप वैल्यू ऐड करके किसी को बेच रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 वुड बी द आंसर। थर्ड भी कभी नहीं होगा, हम लोग कभी ऐसे माइनस नहीं ऑन परचेज हो, वी नेवर कैलकुलेट इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, राइट, टू फाइंड द नेट टैक्स। सो यहाँ पर वही बोला इनपुट टैक्स ऑन परचेज विच इज इनपुट टैक्स माइनस टैक्स ऑन सेल आउटपुट टैक्स। नेट टैक्स ये नहीं, नेट टैक्स का फॉर्मूला होता है, और we can say calculation method is output tax minus input tax, correct? So ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन बिट ऑप्शन 4 would be the right answer. Let's move to the fourth short question. For a registered dealer, if input tax is x, okay, input tax x बोला है, output tax is y, okay, then input tax credit for the dealer is definitely we know output tax minus input tax. output tax क्या दिया है y, input tax क्या दिया है x, so this would be the amount. net tax क्या होगा? so input tax credit for the dealer is कितना होगा? how much it would be? y minus x. ये जो है ना स्टार मार्क, दिस इज फॉर रुपीज, okay, so y minus x would be the right answer. Okay, let's move to the next short question, that is John sells goods of worth 2000 to Manish belonging to the same state. John gives a discount 20% and charges GST of how much? 5%. then John gets क्या बोला 2000 रुपीज का वर्थ 2000 rupees of goods. Okay, the goods amount is 2000. Now he gives a discount 20%. discount 20%. so selling price क्या हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट? 2000 minus 20% of 2000. so it would be 2000 minus 400, which will be 1600. okay, so 1600 is the selling price. now on top of it, okay, 5% tax needs to be applied. so 1600 plus 5% of 1600, 5% of it, which is 80 rupees. 1600 80 rupees. so the answer will be this one. again this star mark represents rupees. okay, so 1680 rupees would be the answer. so ये सारे क्वेश्चन 1 का शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप का थे, तो हम लोग सारे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ डेटा पॉइंट दिया हुआ है एंड इट इज आस्क्ड टू फिल द ब्लैंक, राइट, fill the blanks. when goods and services are sold for 15,000 under intrastate transaction from station A to station B, right, what it is said, this is an intrastate transaction within same state. station A, there is a station A and another is there is station B, right. This transaction is happening between station A and station B within the same state. so taxes that are applicable is C, GST and SGST. ओके, ठीक है। रेट ऑफ GST इज 12%, तो ये हो जाएगी 6%, ये भी हो जाएगी 6%। एज पर GST सिस्टम SP सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग GST एट स्टेशन ए। सो कहाँ से चीज़ें बेचा जा रहा है? फ्रॉम स्टेशन है। सो ए से ए स्टेशन से क्या गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू स्टेशन बी, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस बोला गया है 15,000, एक्सक्लूडिंग GST बोला है, तो सेलिंग प्राइस डेफिनेटली 15,000 ही रहेगा, करेक्ट। नाउ स्टेशन बी को बेचा जा रहा है, राइट, यहाँ पे बोला एक्सक्लूडिंग GST, दैट्स व्हाई आई केप्ट 15,000 द ओनली द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। लेट्स मूव टू द पॉइंट बी. It is asked how much would be the CGST and what would be SGST amount. Okay, CGST, SGST are how much percentage? 6%. Okay, so 6% of 15,000 is, so CGST is equal to SGST would be
6% of 15,000. 6% of 15,000 is 900. Yes, 900. Then moving on to the next short question. Cost price excluding GST at point B. Correct? Excluding GST at point B, what would be the cost price? So sold at 15,000. So at B, okay, cost price would be, total price क्या होगा? So if I say at B मेरा total price होगा cost price excluding tax plus tax percentage. Correct? So cost price excluding टैक्स क्या होता है? जो भी प्राइस से यहाँ पे बेचा जा रहा है. सो 15,000 would be the answer only. So 15,000. What would the option D? If profit is 5,000, selling price स्टेशन B क्या होगा? So what it is asked? Profit. D number क्वेश्चन में. So this is C. Okay. This is B. This is A. Okay. D में क्या पूछा है? He has brought in a concept of 5,000 of profit. ओके, यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई प्रॉफिट के बारे में बात नहीं किया था. ठीक है. एट क्वेश्चन डी इट इज सेइंग दैट कि ओके, अगर प्रॉफिट 5,000 रखा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? डेफिनेटली सेलिंग प्राइस पे हम लोग एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था विच इज 15,000, ठीक है, प्लस 5,000, ठीक है, दैट वुड बी द सेलिंग प्राइस. ओके, करेक्ट. दिस इज माई सेलिंग प्राइस. ओके, नाउ कुछ और डेटा पॉइंट देके उसी क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करने के लिए बोला है. व्हाट इज इट? नाउ इट सेज दैट प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है. अभी तक प्रॉफिट इंक्लूड नहीं किया गया था, यहाँ तक ए बी सी तक. However, D से प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है. Now, the same goods and services are moved under interstate transaction from state B to state C. Okay, उसी प्रोडक्ट ही वही सारी चीज़ें इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में मूव हो रहा है. ओके, सो दैट मीन्स स्टेशन B was in the state, was in the same state as A. However, स्टेशन C एक डिफरेंट स्टेट में, तो जो भी टैक्स हो जा रहे हैं दैट वुड बी आर IGST. तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन E. राइट. सो B टू C में ट्रांजैक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर GST परसेंटेज बोला गया है 12%. ऑल ऑफ दैट वुड बी IGST, इंटीग्रेटेड GST 12%, क्योंकि B and C are in different state. Okay, now क्या बोला? What would be the GST amount? It has asked only the GST amount. Now our price has become 20,000. So this guy is selling. Okay, so this guy is selling the product. Okay, 20,000. So 20,000 पे 12%. So 12% of 20,000 would be 2,400. Okay, cool. Now question F बोला है कि CP cost price excluding GST at station C. Okay, so okay. So cost price excluding GST at station C. So cost price क्या होगा excluding GST at station C? 20,000 only, right? So 20,000 would be my cost price at station C. So let's see the answers. Correct? Everything is correct. So question A का answer of question A is 15,000, then B is 900, C's answer is 15
Okay, this is should be 15,000. Okay, excluding tax. So it is asked cost price excluding tax. It's 15,000. My bad, it has been a typo. शॉर्ट क्वेश्चन डी का आंसर होगा 20,000 बिकॉज ये प्रॉफिट इंक्लूड करने के लिए बोला गया है. ई का आंसर होगा जीएसटी परसेंट, डीएसटी अमाउंट पूछा गया है. सो 12% ऑन 20,000 इज हाउ मच? 2,400. सो लेट मी मार्क ऑल द आंसर्स. दिस इज वन ऑफ द आंसर, दिस इज वन ऑफ द आंसर, this is another answer, this is another answer, this is another answer, and the final answer is 20,000. because क्या पूछा है? excluding GST. if अगर including पूछा गया होता तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते 20,000 plus 2,400, but excluding GST पूछा है, so we do not need to add. I hope it is clear. So let us move to next question. Okay, what it is said in the next question? Question says goods and services are sold from Agra, UP to Kanpur, UP. So they both are in the same state for 20,000. Then from Kanpur to Jaipur, which is in Rajasthan. Okay. If the rate of GST is 18%, the profit made at Kanpur 5,000. Find net GST payable by the डीलर एट कानपुर, जीएसटी रिसीव्ड माने जीएसटी पेड. वेरी सिंपल. हमारा टैक्स ऑन जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, कहाँ से कहाँ बेचा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीएसटी पेएबल एट डीलर कानपुर. सो हम लिख लेते हैं ऐसे. सो जीएसटी पेएबल एट डीलर कानपुर. ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगेगा? पहले तो डीलर एट कानपुर bought the goods or services at 20,000 price point. Right? So क्या बोला? From Agra to Kanpur the product was sold at rupees 20,000. Then from Kanpur to Jaipur it was sold and profit made at Kanpur is 5,000. So Kanpur person bought the goods and services at 20,000. Okay, and the GST percentage it paid. So dealer at Kanpur paid GST. How much? 18% of 20,000. How much it would be? 3,600 rupees. Okay. Now, how much profit it is keeping? Profit made by Kanpur dealer while selling to Rajasthan dealer is 5,000. So how much would be the selling price? So selling price would be 20,000 plus 5,000, which will be equal to 25,000. What is our tax said? Tax is said to be 18%. So GST received from Rajasthan dealer would be 18% of 25,000. Right? If I calculate 18% of 25,000, how much it would be? Correct? So 25 into 8, which is 200, 20, 25 into 1, 25 plus 20, which will be 45. So it will be 4,500.
Okay, so the amount of GST that Kanpur dealer received is this much, so we can say this is output tax and we can say this is input tax, right? So how what it is asked, that find the net GST payable by dealer at Kanpur. Okay, GST received minus GST paid, so 4500. So if net GST would be 4500 minus 3600, which is 900. I could have quickly calculate by applying the formula GST on the profit or GST on value addition. So that would have comes to also. So this is my answer. If I calculate in another way, GST on value addition, how much it would be? So 18% on what profit was 5000. So 5000 के ऊपर अगर 18% लगाया जाए तो the amount would be 900. ठीक है. So this is, we can say, input tax credit method, or this is GST on value addition method. Good. Let's move to the next question. Question number 4. Question 4 says goods and service are sold from Kota to Mumbai. So Kota to Mumbai, right? Say both are in the differences. Kota in Rajasthan, Mumbai is in Maharashtra. For 20,000. Okay. Then from Mumbai to Pune, right? They are both are in the same state. Mumbai and Pune are in Maharashtra. If the rate of GST is 12%, if the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is 5,000, okay, then find the net GST paid at Pune. So let's see the chain first. पहले कोटा से खरीदा गया, someone bought in Mumbai, ठीक है, this is my IGST, the GST is IGST. From here a dealer in Pune bought, so here CGST plus SGST, राइट. ये ट्रांजैक्शन में ऐसे होगा. और यहाँ पर जो बोला गया है गुड्स एंड सर्विस सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई फॉर 20,000. सो यहाँ पर जो आया था सेलिंग प्राइस आ गई 20,000. देन मुंबई टू पुणे, इफ द GST रेट 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई. सो मुंबई वाला डीलर जो बेच रहा था वो प्रॉफिट कितना रखा 5,000. सो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000, 25,000. ठीक है. फाइंड द नेट GST पेड एट पुणे. सो पुणे वाला बंदा को डीलर वो एंड कंज्यूमर हो, उसको कितना नेट GST पे करना पड़ेगा. ठीक है. पुणे वाला बंदा को कंसिडर किया गया है, दिस इज ही इज एन एंड यूजर. ओके, ही इज एन एंड यूजर. इसका मतलब ही इज नॉट गोना सेल टू एनीवन एल्स, राइट. सो ही विल कीप द प्रोडक्ट विथ हिमसेल्फ एंड यूज द प्रोडक्ट. ठीक है. सो एंड यूजर को टैक्स कितना पे लगेगा. एंड यूजर के साथ हम कोई इनपुट टैक्स, क्रेडिट या वैल्यू एडिशन वाली टैक्स कुछ नहीं लगा सकते. व्हाट इट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेलिंग प्राइस. और टोटल सेलिंग प्राइस मुंबई वाला ट्रेडर कितना बेच रहा है 25,000 पे, इसके ऊपर प्लस कितना परसेंटेज ऑफ GST देना पड़ेगा 12% ऑफ GST. ठीक है. सो 12% ऑफ GST वुड बी what total GST is 12%. So CGST would be 6%, SGST would be 6%. ठीक है. So if I calculate 6% of 25,000 would be 150. Then this, right? Yes, 1,500. So 1,500 of CGST amount and same amount of SGST would need to be paid by पुणे ट्रेडर. सो चलिए यहाँ पे स्टेप वाइज लिखते हैं. व्हाट वी कैन राइट कि सिंस इट इज आस्क्ड अबाउट पुणे डीलर, सो डीलर पहले मुंबई का लिखते हैं. डीलर एट मुंबई bought the goods and services at price how much
20,000, right? Mumbai dealer keeps a profit of 5,000. So selling price for Mumbai dealer would be 25,000. Hence buying price for Pune dealer would be 25,000. GST, since the transaction is intrastate, CGST would be SGST would be equal to 6%. Okay, so calculating the 6% of equal to 6% of 25,000. So 6 by 100 into 25,000, so which is 1,500. So total GST amount to be paid by Pune dealer is 2 into 1,500, which is 3,000. करेक्ट। आई होप आप लोग को समझ आ गया है। वेरी सिंपल, सेम लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वेर ऑन द दोनों सिमिलर ही प्रॉब्लम थे, बस इसमें द ट्रांजेक्शन, द सेकेंड ट्रांजेक्शन वॉज बिटवीन 2 states, वेर इज द आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 में द सेकेंड ट्रांजेक्शन वॉज आई बिलीव विद इन द सेम स्टेट। ओके, perfect. That's okay. Then let's move to the next question, question number 5. Okay, what does question number 5 say? A is a dealer in Banaras, okay, Banaras UP. He supplies goods and services worth rupees 8,000 to a dealer B in Agra. So they both are in same state. So this I can write, Banaras dealer sells to Agra. Tax would be CGST plus SGST. Okay, what is the amount? The amount is 8,000. Okay, dealer B then, so this is dealer A, so this is dealer A, this is dealer B. Okay, dealer B in turn supplies the same good to dealer C in Patna. So this guy sells to another dealer who is in Patna. Okay, so this becomes IGST, interstate transaction. Okay, and keeps a same to dealer C in Patna, Bihar at a profit. So he is keeping a profit of 1,200, which is the selling price becomes 9,200. 8,000 plus 1,200, which is 9,200. Correct. Find the input and output taxes for the dealer C. So dealer C के लिए input output tax क्या होगा ये पूछा है under GST system. If the rate of GST is 18% and C doesn't sell his goods and services further, this guy is not selling the product. ये बाद में और किसी को सेल नहीं करा, इसका मतलब ये कंज्यूम करा है. It becomes end user. Correct. So he is a end user. Now what is this? At dealer C, what would be the input tax and output tax? So हमें इधर dealer C को लेके सारे कुछ problems का solve करना है. ठीक है. So let's see. We can write like this. At dealer C, okay. Dealer C जब खरीदता है, the buying price should be buying price of goods and services should be 9,200.
है कि नहीं, करेक्ट, ठीक है। देन GST applicable percentage of GST applicable is, इस केस में क्या होगा, 18% दिया गया, 18% across the transaction बोला गया, राइट। नाउ सिंस dealer C buys from dealer B who is in different state, right? Dealer C buys from dealer B who is in different state, so GST would be IGST, ठीक है। So it would be 18%. So 18% of what? 18% of 9200, correct? So if I calculate here, it would be equal to 18 by 100 into 9200. If I cut it up, if I multiply it 6, $1656 would be the answer. So this is the GST amount that he needs to pay to B, which would become the, for him it would be input tax, because वो प्रोडक्ट खरीदने के टाइम ये टैक्स दे रहा है। सो सी खरीदता है गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम बी, जब खरीद रहा है ये टैक्स देना पड़ेगा along with 9200. So total amount to be paid would be 9200 plus 1656, ठीक है। So 1656 would be input tax. What would be the output tax? Output tax would be 0 as C does not sell the product. क्योंकि वो बेच नहीं रहा है तो वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा और कोई यूजर से और कोई बायर से, ठीक है। तो उस केस में उसको कोई आउटपुट टैक्स मिलेगा नहीं। सो इन दिस एग्जांपल सी क्वेश्चन के लिए आउटपुट टैक्स होगा, और सी के पास आउटपुट टैक्स क्या होगा, 0, इनपुट टैक्स होगा 1656, राइट, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स सी क्वेश्चन 6 क्या बोलता है। ए इज ए डीलर इन मीरठ यूपी एंड ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 15,000 टू ए डीलर बी इन रतलाम एमपी। सो ए जो डीलर है ना, इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है, करेक्ट। और जिसको वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है और सप्लाई कर रहा है, राइट, ही इज इन रतलाम विच इज इन एमपी। सो दे आर इन द 2 डिफरेंट स्टेट। सो यहाँ पर हमारा जो जीएसटी लगेगा दैट वुड बी आईजीएसटी। सो ए डीलर है यूपी में, ही सेंड्स सम गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डीलर हु इज इन एमपी। सो हमारा टैक्स जो यहाँ पर एप्लीकेबल है दैट वुड बी आईजीएसटी, ठीक है। और कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, 15,000। सो selling price is 15,000. Dealer B in turn supplies the same goods and services to dealer C in Jabalpur. So इस केस में क्या हो रहा है, dealer B sends the same goods and services to dealer C, another person who is in Jabalpur. Jabalpur is also in MP. So इसमें टैक्स आ जाता है SGST प्लस CGST, ओके। एट प्रॉफिट 3,000, सो यहाँ पर वो प्रॉफिट कितना रख रहा है, 3,000। सो 15,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 18,000। क्वेश्चन कुछ सिमिलर ही है, 3rd and 4th का ही क्वेश्चन है। 18,000 हो जाता है सेलिंग प्राइस। इफ रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम इज 18%, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल टू जीएसटी वुड बी इक्वल टू 18%,
इंडिविजुअल ये कितना कितना होगा 9%, ये भी 9% होगा। द कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर सी, डीलर सी को कॉस्ट कितना पड़ा और उसमें टैक्स ऐड करके बताओ बोल के बोला है। सी इन जबलपुर एज्यूमिंग दैट डीलर सी डज नॉट सेल दिस गुड्स सर्विसेज टू फर्दर, डीलर सी ये बोला गया है कि दिस इज एन एंड यूजर, एंड यूजर मीन्स व्हाट, ही डज नॉट सेल एनी फर्दर, तो ही कैन नॉट सेल। ओके, तो सी अगर कैन नॉट सेल, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्राइस ही नीड्स टू पे इंक्लूडिंग जीएसटी, वो कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन बिट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है। Second question, what does it say? It says net tax payable by dealer B. So to dealer B, how much total tax dealer B needs to pay? So let's calculate. For calculating dealer B, how much he needs to pay the tax, हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा इसका इनपुट टैक्स क्या था और इसका आउटपुट टैक्स क्या है। आउटपुट टैक्स मतलब क्या, डीलर बी को डीलर सी से कितना टैक्स अमाउंट मिल रहा है, दैट वुड बी आउटपुट टैक्स, एंड डीलर बी डीलर ए को कितना टैक्स दिया, दैट विल बी इनपुट टैक्स। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर डीलर बी। 8 डीलर बी, ओके, डीलर बी के लिए बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, 15,000 because dealer A is selling that product in the 15,000। टैक्स अमाउंट क्या होगा 18% ऑफ 15,000। ओके, सो इट वुड बी so this would be my tax amount। okay, so this would be what, this will be my input tax, this much amount of tax dealer B has to pay to dealer A, right? Similarly 8 dealer C, C के लिए कैलकुलेट करते हैं चीज़ें क्या होता है। बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा, बाइंग प्राइस वुड बी how much, 18,000 because dealer B is keeping a profit of 3,000। okay, tax क्या हो जाएगा, tax amount would be CGST plus SGST। ठीक है, CGST क्या है 9% of 18,000 plus 9% of 18,000, which I can total में बोल सकता हूँ 18% of 18,000, which would be how much, which would be 18, okay, I can cancel out 2 zeros, then 18 into 18, how much it would be, so it would be 3240। so the tax that dealer C pays to dealer B would be 32 how much 40। okay, now if I, so this would be what, this would be the tax that is paid by C, so this would be a output tax for dealer B, so this tax would be output tax for dealer B, right? so now we will go to the questions में क्या बोला है कि first question is the cost including GST of goods and services to the dealer C in Jabalpur। so total cost dealer C के लिए कितना आ जाएगा, question में total cost of for dealer C would be 18,000 plus 3,240, 18,000 plus 3240, which will be equal to 21,000, okay, 240। what is the second short question it is asked,
the question that is asked, net pay taxable at dealer B. So at dealer B, net payable tax would be output tax minus input tax. As I said, output tax for dealer B is 3240 minus input tax was, I guess, 2700. Yes, 2700, which is equal to how much? 540, right? So 540 also, if I calculate in the way of GST on value addition, will also come to that, because GST on value addition would be 18% of profit amount. Was how much? Profit amount was 3000. So 18% of 3000 would be 18 by 100 into 3000, 540 only. So the two answers that are coming here is this is the total amount डीलर C को पे करना पड़ेगा टू डीलर B जब वो गुड्स एंड सर्विस खरीद रहा है, एंड 540 इज द नेट टैक्स पेबल. सो इतना रुपीस 540 अमाउंट ऑफ रुपीस डीलर B गवर्नमेंट को एज ए टैक्स देना पड़ेगा. करेक्ट. आई होप आप लोग को समझ आ गया ये वाला क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके हैं. रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर सकते हो. अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को जीएसटी चैप्टर को कंसेप्चुअली पढ़ने में मदद कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए.